beginning. Try to wipe you out is killing. Ever since my heart's been missing.
Hello, mic testing. Is it audible for the stream? I hope I'm audible to everyone. Hello, hello. Well, okay. Hi guys, welcome back. So we are here back again to this new series. I hope you guys are enjoying this entire series and you guys are getting what we planned to deliver. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं about the very key work of this switching live, right? So in today's live session, myself Akash Nigam, and we will be trying to dive a bit more deeper into the word of VLAN, the virtual local area networks. Whether you being a beginner looking to understand the basics or an advanced a user who needs to just master the complex configuration, this particular session has something for you. Okay, but before that, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so that you can stay updated with our latest tech tutorials. Okay, so without much ado, let's start. Now, I would like to present you the entire flow here, the topic flow that I will be taking care of for today. It would include some key things here. Okay, I won't be going with the type 1. Let's just write up down here. Yeah. So guys, if I talk about the topic wise flow, I'm going to start your session from the introduction of the VLANs. Just a second. Yeah. So we'll start from the introduction of VLANs. क्या होता है VLAN, बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, राइट? एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ VLANs, जो सबसे खास चीज होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या पर्टिकुलर किसी भी फीचर को इम्प्लीमेंट करने से पहले सीखनी, राइट? अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे एंड यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, तो डेफिनेटली हमें इन सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है. After VLANs introduction, the next thing that I'll try to cover would be your VLAN basic. So don't worry, अगर आपको VLANs पे आपने पहले काम किया है या it is completely new for you, so don't worry. I'll be involving every particular aspect of the learning. Okay. Now, if we move ahead, after VLAN basic, we'll learn about the configurations also. Okay, देखो, किसी भी particular element को learn करने के लिए उसका configuration सीखना बहुत जरूरी है, right? So we'll be learning about the configuring of the VLANs over to the switches also. After that we'll move ahead and हम देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही key protocol which is VDP. हालांकि CCNA के particular syllabus में आपको VDP omit कर दिया गया है, but I myself personally feel that VDP is a very important learning that one should have. Then we'll proceed ahead with the inter-VLAN routing. Let's take it in another line because it will be a completely different aspect to learn. Inter-VLAN routing. After inter-VLAN routing, the next thing that we'll do is the advanced VLAN concept. And जैसे ही आपके advanced VLANs concept finish होंगे, so basically in advanced VLAN I'm going to include your private VLANs. Other than private VLANs, we will also indulge the voice VLANs and the VLAN security best practices, क्योंकि बहुत ही खास चीज है, ध्यान रखिए. After that, final thing will be the troubleshooting. Troubleshooting the VLANs. So this is our entire day flow today,
I know this entire thing cannot be covered in a single day, so definitely we'll be breaking it down into 2 different parts of the videos. So आज हम start करते हैं introduction to VLAN से. Okay, all right. Okay, so let's kick the things off with the basics. हम यहाँ पर बात करने वाले हैं about VLAN. Okay, VLANs की बात करें तो क्या है VLAN एग्जैक्टली? VLAN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क. वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क. असल में VLAN आपको अलाउ करता है सेपरेट नेटवर्क्स बनाने में, जो कि आप एक सिंगल नेटवर्क के अंदर से ही निकाल के बनाओगे. इसको असल में कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन, दैट मींस ब्रेकिंग डाउन. एंड इस तरीके की सेगमेंटेशन प्रोसेसेस हमारे नेटवर्क में या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं? ये आपकी सिक्योरिटी को इन्हांस करेंगे, ये ट्रैफिक के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएंगे आपकी नेटवर्क डिज़ाइन की. आमतौर पर जब भी हम इसको सेशंस में डिलीवर करते हैं, trainers always love to give the example of bifurcating the entire network. मैं हमारे ट्रेनिंग बास्केट का ही सेक्शन ले लेता हूँ. Let's say this is the entire floor of training basket. तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी कई सारे बैचेस चलते हैं, अलग अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, राइट? तो इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को हम एक सिंगल लैन मानते हैं. एंड डेफिनेटली जिसको पाइथन का स्टडी करना है वो पाइथन लैब में जाएगा. नेटवर्किंग स्टूडेंट्स नेटवर्किंग लैब में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स जिनको यूआई यूएक्स के सेशंस लेने हैं उनका एक सेपरेट क्लासरूम चलेगा. क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही वक्त पे सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह पे बैठ के सारी चीजों की पढ़ाई कर सके? नॉट एट ऑल, राइट? द रीजन इज every particular user in this particular environment has its own use case, a separate use case. जिस कारण से ये एक साथ कोऑर्डिनेट करके यदि काम करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा. इसी तरीके के कुछ सेगमेंटेशन की जरूरत हमें अपने इंफ्रा में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में करना होगा. एंड फॉर दैट रीजन आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क को वर्चुअली VLANs में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. टेक्निकली स्पीकिंग गाइस, VLAN एक 12 बिट की एंटिटी है, 12 बिट इन लेंथ. रिमेंबर माय बिट टू वैल्यूज कैलकुलेशन. सो बिट्स आर व्हाट? 0 and 1 बाइनरी बिट्स. 2 पॉसिबल नंबर्स. इन 2 पॉसिबल नंबर्स के 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे आपके VLAN. दैट मींस 2 raised to the power 12. that will give you a value range between 4096. ये कहलाएगा आपका VLAN का रेंज. I hope this is clear. अब इसी VLAN के सेक्शन को अगर हम इन डेप्थ देखते हैं गाइस, सो ये रेंज आपकी शुरू होती है फ्रॉम VLAN 0 एंड इट विल एंड अप एट VLAN 4095. VLAN 0 की बात की जाए तो VLAN 0 बेसिकली रिजर्व्ड है, एंड ये रिजर्व की गई है ताकि ये उन फ्रेम्स को इंडिकेट कर सके जिनको क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए प्रोसेस होना है, मगर वो फ्रेम्स अनटैग्ड होंगे. I'll write it down in form of statement for you. This is a statement for VLAN 0. The VLAN 0 it is used to indicate frames that should be processed for quality of service, but they are sent untagged sadly. जी हाँ, इनमें कोई टैगिंग नहीं होती है, एंड इसीलिए VLAN 0 को रिजर्व किया गया है ऐसे खास VLANs के ट्रैफिक को ट्रैवर्स कराने के लिए.
जिस तरीके से VLAN 0 रिजर्व था, वैसे ही VLAN 4095 को भी रिजर्व किया गया। अब VLAN 4095 को रिजर्व किया गया फॉर आइडेंटिफाइंग सच फ्रेम्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड, राइट, लाइक जिनको इंटरनल डिवाइस ऑपरेशंस के लिए यूज करना। So for those deals, VLAN 4095 was also reserved. Reserved and indicates frames that should drop. आप इसको ये भी ध्यान रख सकते हो कि VLAN 4095 इंटरनल डिवाइस ऑपरेशंस के ट्रैफिक को लेकर के जाती है, जस्ट लाइक योर TCP ट्रैफिक एंड ऑल। CDP नहीं कह सकते, राइट, उसके भी इंटेंस ट्रैफिक हो गया, इट्स नॉट CDP गाइस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों ही VLANs का स्पेशल रोल है, ओके, एंड ये आपके रेगुलर नेटवर्क ट्रैफिक के लिए यूज नहीं की जा सकती, ना ही आप इसको किसी पर्टिकुलर स्विच पोर्ट पे असाइन कर पाओगे। टिपिकली जब आप VLAN सेगमेंटेशन प्रोसेस करोगे, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे किया, तो हम वापस आते हैं इसी डायग्राम पे, फिर हम आएंगे वापस हमारे रेंज पे विच हैज बीन रिजर्व्ड। तो ये है आपका बेसिकली वो LAN नेटवर्क जिसको आपको सेगमेंट करना था, जस्ट एज पर योर यूसेज। एंड टू सेगमेंट दिस पर्टिकुलर LAN नेटवर्क, मैंने यहाँ पे अलग अलग क्लासरूम्स बना दिए हैं, just like I have used these wooden partitions or the brick walls to separate these particular classrooms this with respect to their particular courses. Similar तरीके से आप एक LAN नेटवर्क के अंदर multiple VLANs बना सकते हो, identifying by different numbers. And for human identification, you can even modify or assign them an identical characteristical name. So guys, this is the VLAN. VLAN को define करने के लिए आप उसको याद रख सकते हो with a definition that creates on the respect of the broadcast domain. LAN नेटवर्क की अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल LAN नेटवर्क एक एंटायर ब्रॉडकास्ट डोमेन को सिग्निफाई करता है। So this is a broadcast domain. Now, अब VLAN फंक्शनैलिटी की अगर बात करेंगे तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को अगर आप वर्चुअली बाइफर्केट करते हो छोटे छोटे एलिमेंट्स में, दैट इज योर वर्चुअल LAN. So a broadcast domain, if divided into multiple smaller broadcast domains, that feature is called as VLAN. A broadcast domain broken down to multiple smaller broadcast domain, that is the feature of VLAN. अच्छा, हमने देखा ना 12 बिट से हमें 4096 वैल्यूज मिले, राइट, एंड ये वैल्यूज आपके VLAN 0 से लेकर 4095 से जा रहे थे, बट बीइंग रिजर्व्ड, कैन यू यूटिलाइज देम? नो। तो यूजेबल रेंज हमारे पास क्या बचता है? लेट्स सी, if 0 and 4095 is reserved, that means the usable range is between 1 to 4094. Guys, now come to the entire range of VLAN which starts from VLAN 1 and which ends up at VLAN 4094. It seems to be like a very huge range of the VLANs, right? But sadly, we cannot easily utilize these particular ranges also. Yeah, you heard me right. VLAN 1 to 4095 को यूज किया जाता है बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए, स्पेशली अगर आप VLANs को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं स्विचेस के दौरान, तो वहां पर एक खास ब्रेकडाउन होता है गाइस। उस ब्रेकडाउन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इस कैटेगरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो VLAN रेंजिंग फ्रॉम VLAN नंबर 1 to VLAN 1005, इन्हें कहा जाएगा नॉर्मल VLAN। नॉर्मल VLAN ऐसे VLAN रेंजेस होते हैं जिनको आप किसी भी वेंडर के डिवाइस में क्रिएट कर सकते हो, नॉट ओनली ऑन Cisco devices, it can be created on any vendor. It's the open standard.
Then comes the VLANs which start from 1006, and these particular VLANs, they would end up at 4094. This specific VLAN range cannot be created on any random switch. It needs to be a Cisco switch, क्योंकि ये Cisco की proprietary VLANs है. Being Cisco's proprietary VLANs, ये VLANs आपके किसी भी Cisco switch के साधारण नोड पे नहीं बन सकते. If you want to create these particular VLANs, आपके Cisco device को specifically BTP के transparent mode पर configured होना होगा. आपका डिवाइस स्विच BTP के ट्रांसपेरेंट मोड में कॉन्फ़िगर होगा, उसके बाद ही आप उस पर ये रेंज की VLAN बना पाओगे. एंड इंटरेस्टिंगली these extended VLANs are stored in a very different place. We'll look for that also. Moving on, इसको यदि आप नॉर्मल और एक्सटेंडेड VLAN के नजरिए से ना देख करके एक सीक्वेंशियल रेंज में देखना चाहते हो, so guys, always remember the VLAN number 1. VLAN 1 को डिफॉल्ट VLAN कहा जाता है. आपने सुना होगा Cisco devices इतने स्मार्ट स्विचेस होते हैं कि they can operate at their own, right? Let's say I'm an organization owner and I don't have the enough sufficient strength of the engineers to operate over the devices. And मुझे switches का उतना intense use case भी नहीं पड़ रहा है इस वक्त. I just want them to perform switching. So for such cases, your Cisco devices can be utilized as a plug and play device. आप PNP devices की तरह उनको use कर सकते हो. Just plug it into your network. The devices will start getting the frame switched. I hope guys आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा होगा. If you guys are understanding it, please hit the like button. Please keep on commenting, and if there is any question, please comment it on the comment box guys. VLAN 1 जिसको हम डिफॉल्ट VLAN बोलते हैं, ये कई सारे स्विचेस पर मैनेजमेंट VLAN के तौर पे भी काम करता है. मैनेजमेंट VLAN बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट VLAN में ही आपके सारे पोर्ट्स होते हैं शुरुआती तौर पर. एंड VLAN 1 के अलावा आप इसको किसी और पर असाइन करना रेकमेंडेड मानते हो. इट इज द इंडस्ट्री रिकमेंडेशन. दैट मीन्स आपके सारे के सारे पोर्ट शुरुआती तौर पर VLAN 1 पर होंगे until and unless आपने उनको स्पेसिफिकली कहीं रीअसाइन ना किया. इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की बात कर लेते हैं. क्योंकि VLAN 1 आपका डिफॉल्ट VLAN होता है and often it is used for the management purposes, I mean. तो ये हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप इसको यूज करना अवॉइड करोगे रेगुलर यूजर ट्रैफिक के लिए. अगर आप VLAN 1 यूज कर रहे हो, सो इट इज अ वेरी रिस्की स्टेप. गाइस, थिंक अगेन बिफोर डूइंग दैट थिंग. द रीजन इज मैनेजमेंट ट्रैफिक को एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट VLAN पे ही फ्लो करना चाहिए. And if you are leaving your crucial information over to the default positions, definitely they are open to any attacks, right? So always remember VLAN 1, default VLAN, management VLAN, and its security consideration. After that, second one. guys, ध्यान रखना, मेजर कैटेगरी तो नॉर्मल और एक्सटेंडेड ही होता है. ठीक है, ये है आपका एक्सटेंडेड VLAN. बट इसको याद करने के लिए मैं एक और in-depth categorization दे रहा हूं. ठीक है, so after VLAN 1, the second range, this second range starts from VLAN number 2 and it will end up at VLAN number 1W1. Yes, and this is the normal range guys. normal range होने के साथ साथ इसको एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन दिया गया है. दैट इज द
यूजर डिफाइंड VLANs, इन्हें कहा जाता है यूजर डिफाइंड VLANs। यूजर डिफाइंड VLANs गाइस टिपिकली ना नेटवर्क ट्रैफिक के सेगमेंटेशन के लिए यूज की जाती हैं, जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट। इन VLANs को क्रिएट किया जा सकता है इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, और सेपरेशन के लिए इसको आप यूज कर सकते हो किसी भी यूजर ग्रुप, टाइप ऑफ ट्रैफिक या डिपार्टमेंट्स के सेपरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। यूजर डिफाइंड VLANs होने के साथ साथ इन्हें नॉर्मल रेंज ऑफ द VLANs भी कहा जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंज है VLAN का, ठीक है। और इसको आप एवरीडे नेटवर्किंग में लॉजिकल सेगमेंटेशन के लिए सिमिलर नेटवर्क में यूज करते हो। दैट्स व्हाई इट इज द नॉर्मल रेंज VLAN। Okay, so this was the categorization of the normal range. After normal range, the next element that you are going to see here would be, yeah, I found it interesting जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, right? Let's see. So third categorization is of the reserved VLANs. ये रेंज आपकी स्टार्ट होगी फ्रॉम VLAN 1002। बेसिकली यहां पर 4 VLANs का काउंट आने वाला है, 1002, 1003, 104 and 1W5. Yes, these are the again your reserved VLANs. जनरली क्या होता है, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो, किसी टूल को अपडेट करते हो, या किसी भी पर्टिकुलर वर्जन को अपडेट करते हो, हर अपग्रेड अपने प्रीवियस वर्जन के कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शंस लेकर के रखती है, राइट। सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं व्हाट्सएप को अपग्रेड कर रहा हूं, तो मैं व्हाट्सएप को अपग्रेड करके वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता, बिकॉज व्हाट्सएप इज अ सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, राइट। सिमिलर तरीके से VLANs का कंसेप्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो देयर वर स्टिल सम कंसेप्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी वर्किंग इन प्लेस ऑफ VLANs और पैरेलली विद द VLANs। कुछ कंसेप्ट्स थे जैसे कि आपका टोकन रिंग टोपोलॉजीज के दौरान इसका इंप्लीमेंट किया जाता था, एंड योर फाइबर डिफाइंड डेटा इंटरफेस, द FDDI, सॉरी इट्स फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, यस। तो गाइस ये बहुत ही रेयरली यूज होते हैं आज के दिनों में, मगर क्योंकि देखो रेयरली यूज होने का रीजन है बिकॉज VLANs को वाइडली अडॉप्ट कर लिया गया है, बट इनिशियली VLANs एक बहुत ही बेसिक और नया कंसेप्ट है, राइट। So it was not, no one was having any foresight to the future whether they will be implemented or accepted in such a usage. And that is why we have given the backward compatibility for these two particular elements, which is token ring and FDDI. So VLAN 10002, 3, 4 and 5 must be available in your VLAN list. They are already active and created, but you cannot utilize them for your regular communication. सिस्को स्पेसिफिक टर्म में बात करें तो सिस्को के स्विचेस में इन VLANs को आप नहीं डिलीट कर सकते हो, और इनका स्पेसिफिक यूज होता है सिर्फ और सिर्फ लेगेसी टेक्नोलॉजी को टाई करने के लिए। एंड नाउ कम्स द फाइनल सिनेरियो ऑफ द VLANs, द फोर्थ कैटेगरी, the VLANs which range from VLAN 1006 and when they end up at 4094. Guys, इन्हें कहा जाता है एक्सटेंडेड VLAN रेंज। हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये क्या कहलाती हैं आपकी, हैं ये एक्सटेंडेड VLAN रेंज। ये VLANs ज्यादातर यूज की जाती हैं स्टैंडर्ड रेंज के मुकाबले। I mean, जब आपको एक से VLAN 2 से 1001 तक की VLANs से भी ज्यादा VLANs की जरूरत है, देन यू कैन यूटिलाइज देम। मगर ये कुछ ही स्विचेस में सपोर्ट की जाती हैं, सभी स्विचेस में अवेलेबिलिटी नहीं है इनके कॉन्फ़िगरेशन की। दे आर सपोर्टेड ऑन सर्टेन स्विचेस। अब बात करें अगर हम BTP के मोड कंसिडरेशन की, तो
जब भी आप VLANs का एक प्रोटोकॉल है BTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जब भी आप VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का यूज करोगे और एक्सटेंडेड VLAN रेंजेस जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, इनको प्रॉपरली मैनेज करना चाहोगे यदि आप BTP के साथ, आई मीन टू से if BTP and this VLAN 1006 to 4094, अगर आप इन दोनों ही चीजों को प्रॉपर मैनेजमेंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको BTP का वर्जन 3 चाहिए होता है। BTP वर्जन 3 ही सपोर्ट करेगा इसको। BTP वर्जन 1 और 2 में कोई भी एक्सटेंडेड VLAN रेंजेस का सपोर्ट नहीं होता है। कुछ खास कंसिडरेशन गाइस हमेशा याद रखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी कुछ बातें बता देता हूं। VLANs हालांकि होते तो 1 से 4094 की रेंज में क्रिएट है, मॉडिफाई भी कर सकते हो आप, असाइन भी कर सकते हो उसको, बट ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटवर्क की डिजाइन की नीड के ऊपर। क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन इज पॉसिबल। कॉन्फ़िगरेशंस के अलावा हमें इसके सेगमेंटेशन को भी नहीं भूलना चाहिए। लेट्स रिकॉल द सेगमेंटेशन अगेन। आई नो आज बहुत थ्योरी हो गया है। वी विल बी मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट वेरी सून गाइस, सो स्टे विद मी। नाउ सेगमेंटेशन की बात करते हैं यदि, तो गाइस VLAN को आप यूज करते हो लोकली सेगमेंट करने के लिए अपने नेटवर्क को, ताकि आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो सके, राइट। एंड इसके साथ ही साथ आप चाहोगे कि आपका नेटवर्क में जितने भी डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक, राइट, वी कैन इजीली आइसोलेट देम फ्रॉम वेरियस यूजर्स। सो for the isolation and segmentation, that is basically separation. Isolation itself has the entire meaning, right? So I'll just write it as isolation here. Isolation and the segmentation of the network. These two are the terms. And finally, the trunking scenario. VLANs को आप कैरी कर सकते हो अपने साथ मल्टीपल स्विचेस के अंदर, मगर उसके लिए आपके स्विच पोर्ट्स को ट्रंक पोर्ट पे कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड इवन योर स्विचेस शुड सपोर्ट tagging protocols so that they can differentiate between the VLAN and the same physical link. So now I'll take you quickly to the packet tracer where we'll be doing the labs, but before that we'll take a quick 2 minutes break and we'll be back. Okay, so let's catch up in 2 minutes break.
Okay, so we are back. We'll continue the VLAN part again. And let's see, एक बार सभी को हम फटाफट से ब्रीदर दे देते हैं, right? Let's just check on to all those particular elements जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी. So we were discussing about VLAN, right? देखो, बेसिकली बात की जाए तो एक LAN नेटवर्क क्या होता है? LAN नेटवर्क को आप LAN, MAN, WAN किसी भी एलिमेंट की अगर आप बात करते हो, इन सभी के abbreviations में you find this AN written there, right? AN stands for area network, correct? Guys, मैं कहता हूँ हमेशा मेरे बैचेस में मेरे सेशंस में हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि abbreviations में ही उनका पूरा प्रोसेस छुपा होता है, right? अगर आप abbreviations के वक्त को पूरा डिस्क्लोज करते हो या पूरा का पूरा अनकोड करते हो, तो you can have the entire definition in your hand. Local area network, wide area network, metropolitan area network, or the personal area network. A personal space will be a very close space. That could be between two persons, 2 or 3 persons, or max to max a limited spacious persons of a family, right? That is the personal area network. ऐसे नेटवर्क कनेक्टिविटीज के लिए आप पैन को स्पेसिफाई करते हो. पैन का एक वायरलेस वेरिएशन में आप ब्लूटूथ को अपना एग्जाम्पल कंसिडरेशन में ले सकते हैं. ब्लूटूथ हालांकि वायरलेस पैन का एग्जाम्पल है, बट यस इट कैन बी टेकन इनटू द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट प्रॉक्सिमिटी, राइट? छोटे से एरिया में, पर्सनल एरिया में. देन सिमिलरली इफ यू गो फॉर द लोकल एरिया, अ लोकल एरिया इन्वॉल्व्स आपका ऑफिस का बिल्डिंग. आपके 3-4 ऑफिस अगर एक ही एरिया में, एक ही बिल्डिंग के आसपास है, तो दे कैन बी कंबाइंड ऑल टुगेदर. Local area network is a fixed geographical area
which combines up your office building, branch offices and all. Then similarly comes the WAN, which combines multiple LANs altogether. Okay, so I hope this LAN man WAN structure is completely clear. And इनको हमेशा define करने के लिए geographically established terms का use किया जाता है. तो LAN तो ठीक है, मगर ये VLAN क्या हो? LANs के multiple छोटे segmentations को ही VLAN कहा जाता है. If you want to see to this, this is the example of VLAN. If we come to VLAN, बताया था मैंने एक लॉजिकल ग्रुप है, राइट, जहां पर आप सिमिलर लैन को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड इसी को कहा जाता है योर VLAN. लॉजिकल ग्रुपिंग करने के लिए असल में आपके स्विचेस पर होते हैं स्विच पोर्ट्स. देयर विल बी स्मॉल RJ45 फीमेल जैक्स जहां पर यू विल बी एंटरिंग योर RJ45 कनेक्टर्स. तो these particular ports in the switches, they are called as the switch port. इनको switch port बोलते हैं. अब switch port पर ना तुम्हारा पूरा switching का पूरा स्टोरी establish कर दिया जाता है, ठीक है. अगर आपको switching अच्छे से आना चाहिए, just like routing, most of people have, right? switching को master करने के लिए आपको सबसे पहले तो समझना होगा collision domain और broadcast domain क्या होता है. जब आपको collision broadcast domain के बारे में understanding strong हो गया ना, then just understand switch port क्या होता है. Broadcast domain, collision domain understanding clear, switch port understanding clear. Now learn about the separation on the basis of broadcast domain for the switch ports as well as the separation of the collision domain on the basis of switch ports. जैसे ही आप ये दोनों चीजों को समझते हो आपको पता चल जाएगा स्विच का एग्जैक्ट वर्किंग क्या है एंड उसके सारे के सारे फीचर्स आपको समझ में आ जाएंगे. So always focus in this flow which I'm recommending here. First of all, understand what a broadcast domain is. Then understand what a collision domain is. Broadcast or collision domain समझने के बाद you should understand what a switch port is. Then find out the relations between the two. And guys, yes, after this you all are set to understand VLAN, even entire switching concept. Moving ahead. ये टोपोलॉजी आपको एक VLAN के सेगमेंटेशन का ही एग्जांपल दिखा रहा है. यहाँ पर भी हैव द इंजीनियरिंग VLAN, अकाउंटिंग VLAN और एक VLAN है वॉइस के लिए जहाँ पर सारा का सारा वॉइस ट्रैफिक फ्लो करेगा. गाइस, अगर एक खास बात बताता हूँ, VLAN, हम जिन VLANs की पढ़ाई करते हैं इन VLANs को ट्रैफिक के बेसिस पर 5 कैटेगरीज में बांटा गया है. यस, सो on the type of the traffic that they carry, VLANs are of 5 types. Let me write it for you. Just a second. जिस तरीके का ट्रैफिक जाएगा उसके अकॉर्डिंगली VLANs आपकी 5 तरीके की होती है. So out of those 5 different types of the VLANs, the very first VLAN is your default VLAN. हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसके बारे में, राइट? We are again discussing about this VLAN, the default VLAN. Default VLAN आपके VLAN नंबर 1 को बोला जाता है. VLAN 1 ही वो VLAN होता है जिससे बाय डिफॉल्ट सारे के सारे स्विच पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं, राइट?
अच्छा, मैंने ब्रॉडकास्ट डोमेन का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, राइट? देखो इस डिफॉल्ट वीलैन क्या, ये स्टेटमेंट पढ़ो आप, सारे के सारे स्विच पोर्ट्स एसोसिएटेड होते हैं इसी वीलैन से बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसी वक्त आपको पैकेट ट्रेसर खोल के दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी जस्ट लॉग इन टू माय पैकेट ट्रेसर सेकंड, आप वहां पर देख पाओगे और इस हिसाब से आप जानते भी होंगे कि एक स्विच के अंदर सारे के सारे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 पे तो मौजूद होते ही, बट उसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन क्या है? बाय डिफॉल्ट ऑल द स्विच पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप किसी भी एक पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजोगे, ब्रॉडकास्ट फ्रेम ड्रॉप करोगे, तो डेफिनेटली उस नेटवर्क के सभी डिवाइसेस तक डिलीवर होगा। Okay, just a second. Some secret credentials to be entered here. Allow me a second, guys. Okay, I'll have to log in with my official account. Just a second. It's taking some time. Please allow me a minute, please. We have multiple accounts as well, although the password same, but yes, associations can't change this. Almost done. Almost done. Yeah.
Okay. Cisco has multiple level of authentications and security into their pages, and my new laptop, so okay, it's verifying everywhere for me, whether it's me or not. Okay, it is gonna take time, so I won't waste much of time of ours, right? So we'll just quickly continue with our session. Labs हम yes definitely कल के session करेंगे. So let's continue with the topics that we're discussing. तो देखो, बात हम कर रहे थे डिफॉल्ट VLAN, राइट? एंड डिफॉल्ट VLAN में बाय डिफॉल्ट VLAN नंबर 1 आता है, जिसको खास चीज याद रखना गाइस, यू कैन नॉट क्रिएट दिस VLAN, आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो. Even guys, being a network admin having the entire control in your hand, you cannot even rename it. आप इसको rename भी नहीं कर पाओगे. The only possibility that a network admin can do with the VLAN 1 is the port assignments. आप ports assign reassign कर सकते हो. That is possible. Port assignments के अलावा nothing is possible for a network admin to change over default VLAN. But yes, it is recommended never leave your crucial informations or any particular element associated to VLAN 1 also. Okay. Now, after default VLAN आती है एक ऐसी VLAN जो एक खास टाइप का ट्रैफिक लेके जाती है, जिसे कहा जाता है डेटा ट्रैफिक. हम सब जानते हैं हमारा नेटवर्क में ट्रैफिक की दो वेरिएशंस होती हैं. एक ट्रैफिक होता है जो यूजर जनरेट करता है, द यूजर जनरेटेड डेटा. एक ट्रैफिक होता है जो यूजर बोल के जनरेट करता है, दैट मींस द यूजर जनरेटेड वॉइस डेटा, वॉइस ट्रैफिक. तो डेटा ट्रैफिक और वॉइस ट्रैफिक दोनों ही बहुत ही वेरिएटेड स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं. अगर आप कभी एक डेटा पैकेट को देखोगे और एक वॉइस पैकेट देखोगे, तो इनके स्ट्रक्चर में, इनके फील्ड्स के एलिमेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है. हालांकि हमारा CCNA का इंटायर ट्रैक सिर्फ और सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन का पर ही कह सकते बेस रह गया है. पूरा CCNA का पार्ट ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है. CCNA वॉइस वाज देयर प्रीवियसली, बट आफ्टर द 2020 अपग्रेड the lockdown, right? Everything has been removed from this. But yes, आप previous reflections को study कर सकते हो and you will get an strong foundational understanding of this. Let's move ahead. So the second type of the VLAN that we have is the data VLAN. Data VLAN ऐसी VLANs को कहा जाता है जो data traffic carry करती है. They carry the data traffic. Then comes your voice VLAN. Guys, voice VLANs वो खास VLANs हैं जो आपका voice traffic carry करेगी. इसके अलावा आती है चौथे टाइप की VLAN,
जिसे कहा जाता है मैनेजमेंट वीलैन। जो भी वीलैन आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक लेकर के जाएगी उसे कहा जाता है मैनेजमेंट वीलैन। मैनेजमेंट ट्रैफिक। देन कम्स योर फिफ्थ टाइप ऑफ द वीलैन। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजिंग लगे इस वक्त, बट जब हम ट्रंक लिंक्स पढ़ेंगे उस दौरान आपको इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो द फिफ्थ टाइप ऑफ द वीलैन इज द नेटिव वीलैन। ओके, मैनेजमेंट वीलैन भी बाय डिफॉल्ट आपकी वीलैन नंबर 1 होती है, एंड रेकमेंड किया जाता है कि आप इसको वीलैन 1 से चेंज करके किसी ऐसे वीलैन में डाल दें दैट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन योर प्रेजेंट नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं नेटिव वीलैन। गाइस, नेटिव वीलैन ये भी कैरी करेंगी आपके वीलैन्स का ट्रैफिक, बट ये कैरी करती हैं ऐसी वीलैन्स का ट्रैफिक, दे कैरी द ट्रैफिक ऑफ आप इसको लिख सकते हो थोड़ा, लेट्स बी क्रिएटिव फॉर दिस। ओके, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपको। नेटिव वीलैन का वैसा डेफिनेशन तो बहुत टिपिकल सा है, बट इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। नेटिव वीलैन कैरी करती हैं अनटैग्ड फ्रेम्स। नेटिव वीलैन कैरी करेगी अनटैग्ड फ्रेम्स ओवर ट्रंक लिंक that does not belong to any VLAN. नेटिव VLANs ऐसे अनटैग्ड ट्रैफिक को लेकर के जाती है ट्रंक लिंक के ऊपर से जिसको किसी भी VLAN से एसोसिएशन नहीं मिल पाया। अच्छा, क्या आप लोग गेस कर सकते हो ऐसा कौन सा ट्रैफिक होगा जिसको VLAN से एसोसिएशन नहीं मिला? हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? यस गाइस, इट इज पॉसिबल, डोंट बी कंफ्यूज। सी, देखो, आप लोगों को पता होगा कि आप स्विच के स्विच पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हो किसी पर्टिकुलर VLAN में डालने के लिए, राइट? एंड दैट इज हाउ योर स्विच पोर्ट्स मेंटेन द एसोसिएशन विद द VLAN। अब क्या होगा अगर मैं मान लेता हूं यहां पर मेरे पास दो पोर्ट्स होंगे, दिस डायग्राम आई हैव टू पोर्ट्स, वन इज योर, लेट्स जस्ट कॉल देम एज पोर्ट नंबर 1 एंड 2। ओके, ये पोर्ट नंबर 1 है एंड ये आपका पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 1 से जो पीसी कनेक्टेड है दैट इज पीसीबी, एंड पोर्ट नंबर 2 से जो पीसी कनेक्टेड है दैट इज पीसीई। अगर पोर्ट 1 को मैं VLAN 10 में डाल देता हूं और पोर्ट 2 को मैं VLAN 20 में असाइन कर देता हूं, हम कमांड कौन सी यूज करेंगे, कैसे असाइन होगा, इस चीज का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। दैट आई टीच यू वेरी सून, विल बी गेटिंग एजुकेटेड अबाउट दोस कॉन्फ़िगरेशंस सो इजीली एंड सो स्विफ्टली, आपको पता भी नहीं चलेगा कॉन्फ़िगरेशन कब खत्म होगा। ओके, सो लेट्स सी नाउ, अगर मेरा पोर्ट 1 VLAN 10 पर है, इसका मतलब पीसीबी का निकलने वाला सारा ट्रैफिक VLAN 10 से एसोसिएटेड हो। अगर मेरा पोर्ट 2 VLAN 20 से एसोसिएटेड है तो VLAN 20 पर पीसीबी का ट्रैफिक फ्लो करेगा। दैट मीन्स VLAN से एसोसिएट करने के लिए स्विचेस के पास फिजिकल एंटिटी है, उनके इंटरफेसेस, दैट मीन्स द स्विच पोर्ट। तो स्विच पोर्ट्स ही आपको VLAN से एसोसिएशन देते हैं। अब यदि कोई ट्रैफिक स्विच पोर्ट से अंदर या बाहर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यदि वो ट्रैफिक पीसी से जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो हम उस ट्रैफिक को नेटिव VLAN से लेके जाएंगे।
इज इट क्लियर? बिकॉज जो भी ट्रैफिक पीसी से निकलेगा वही इनपोर्ट से अंदर जाएगा एंड तभी वो वीलैन से एसोसिएट हो पाएगा। यदि मैं किसी पोर्ट से स्विच के अंदर नहीं जा रहा हूँ तो मैं वीलैन से एसोसिएशन ले ही नहीं पाऊंगा। बट इसके अलावा भी एक ट्रैफिक होता है जो स्विच खुद जनरेट करेगा। क्या स्विच को खुद के मैनेजमेंट ट्रैफिक की फिक्र नहीं होगी? The management traffic, the control plane traffic, that they flow throughout the network, right? At various different timers for the different protocols. स्विच खुद भी कुछ ट्रैफिक जनरेट करता है एंड वो ट्रैफिक किसी पोर्ट से अंदर नहीं आ सकता, हाँ बाहर जरूर निकल सकता। तो सच ट्रैफिक विच आर इंटरनली जनरेटेड बाय द स्विचेस, उनको आप कहोगे ऐसा ट्रैफिक जो किसी भी वीलैन से एसोसिएशन नहीं रखता। एंड ऐसा ट्रैफिक जो किसी वीलैन से एसोसिएशन ही ना रखता हो वो डेफिनेटली टैग क्या रखेगा? तो अगर किसी भी पर्टिकुलर ट्रैफिक पे जिसके पास कोई वीलैन एसोसिएशन नहीं है और वो टैग भी नहीं लगा सकता है, ऐसा ही पर्टिकुलर ट्रैफिक होता है जो नेटिव वीलैन से जाता है। गाइस डू रिमेंबर, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई भी सवाल है प्लीज ड्रॉप इट ऑन कमेंट्स, मैं पैरेलली आपके कमेंट्स भी चेक करता चलूंगा। नाउ नेटिव वीलैन वैसा ही ट्रैफिक लेके जाएंगे जो स्विचेस जनरेट करेंगे, बट वो किसी वीलैन से एसोसिएशन नहीं लेता। हमें पता होता है कि ऐसा ट्रैफिक आने वाला है, इसलिए हम जब भी ट्रंक लिंक बनाते हैं जो दो स्विचेस के बीच में कई सारे वीलैंस का ट्रैफिक लेकर के जाती है, हम उस ट्रंक लिंक को पहले बताते हैं कि ट्रंक लिसन, कुछ ऐसा भी ट्रैफिक आएगा जो किसी वीलैन में नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, उसको नेटिव वीलैन में डालना है। दैट इज हाउ वी टीच देम द कॉन्फ़िगरेशन। So these are the 5 types of the VLANs, guys, on the basis of the traffic that they carry. First one is your default VLAN, then data VLAN, then voice VLAN, then management, and the fifth one is the native. The coolest part is default VLAN by default VLAN 1 होता है. Yes, we know. Similarly, not only the default VLAN, but yes, even your management VLAN and native VLAN, these are also by default what? VLAN number 1. And industrial standards में यही recommend किया जाता है that if you are building up your infrastructure, never leave any of your interfaces or never leave any of your switch ports onto VLAN number 1. Because अगर ये चीज आपने पढ़ी है तो एक अटैकर ने भी पढ़ी होगी, right? And attackers definitely कई ज़्यादा ही होल्ड अप होते हैं हमसे, right? I believe so. It's my belief. Okay. Let's move ahead, guys. Now, हमने VLANs के बारे में देख लिया, यहाँ पे VLANs के टाइप की बात कर ली हमने, ठीक है। अभी एक और सब, व्हाट डू गाइस थिंक कि ये VLANs ट्रैफिक कैसे जनरेट करते हैं? सवाल पेचीदा लग रहा है, राइट? लेट्स सी। आपके नेटवर्क में होते हैं स्विचेस, स्विचेस स्विचिंग परफॉर्म करते हैं फ्रेम्स के ऊपर। फ्रेम्स आपको होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, राइट? You will be using switches and then you will be doing the host to host communication on the basis of the MAC address. Now, अगर इस स्विच से मैंने 2 PCs कनेक्ट किए हुए हैं, गाइस, लेट्स कनेक्ट 3, एंड ये तीनों ही PCs अलग अलग VLANs को बिलोंग करते हैं। लेट्स से दिस PC belongs to VLAN 4, this belongs to VLAN 7, and this one belongs to VLAN 10. अब मेरे नेटवर्क में अगर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट रख लो आप, राइट? इसके अलावा सारे के सारे एडमिन रोल वाले एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, एंड मैनेजमेंट रोल यहाँ। तो इस कंपनी के तीनों सेक्शंस को सेपरेट करना जरूरी है, बट हो सकता है मेरी कंपनी की एक और साइट हो वहीं पे, वहां पर भी ठीक ऐसा ही इंस्टॉलेशन पॉसिबिलिटी है। Sorry, just a second, guys. I think I have switched to the wrong page. Yeah, we were here.
Okay, now let's zoom in. It happens. चलिए अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं अपनी स्पीड को, राइट, एंड देखते हैं क्या है ये कम्युनिकेशन। अगर मेरे दूसरे एंड पर भी जो मेरी दूसरी कंपनी की साइट है वहाँ पर भी सिमिलर इंस्टॉलेशन किया गया है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी इसी तरीके से डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज होंगे। तो दिस इज स्विच टू, स्विच से भी मेरे 3 सेक्शंस कनेक्टेड हैं, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। तीनों डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे 3 VLANs जिनसे कनेक्टेड हैं ये एक इंडिविजुअल सिस्टम। जस्ट टू ईज आउट द डायग्राम, here I have this particular device which is connected to VLAN 4, here it is VLAN 7 and here it is VLAN 10. Now guys, अगर आप VLAN association interfaces को देना चाहते हो, the switch ports maintain this particular VLAN association, but there are 2 different types of the modes that you can configure. आपके switch port they have 2 operational modes. सबसे पहले आता है आपका वो ऑपरेशनल मोड जहां पर आपके स्विच पोर्ट्स इंडिविजुअल VLAN का ट्रैफिक लेकर के जाते हैं। हम इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, टेक्निकली इट इज सिंगल VLAN, सो कैरिंग a single VLAN traffic such ports guys are called as the access ports. आप उन्हें एक्सेस पोर्ट के नाम से पहचानते हो। और ऐसे पोर्ट्स जो कई सारे VLANs का ट्रैफिक कंटेन कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रंक पोर्ट। तो क्या होता है एक्सेस पोर्ट, क्या होता है ट्रंक पोर्ट, किस तरीके से ट्रैफिक कैरी करते हैं, यही हमें जानना है। गाइस अब मुझे बताओ, ये जो पीसीज हैं ये जिन जिन पोर्ट से कनेक्टेड है, लेट्स से दिस इज पोर्ट नंबर A, ये है आपका पोर्ट B एंड ये है पोर्ट C, देन हियर आई हैव पोर्ट H, J and K. Other than that, I am also maintaining a connectivity between these 2 switches. So let's call them as port number X and Y. Now you tell me guys, इसमें से कौन-कौन से ports access होंगे और कौन-कौन से ports trunk? Please drop up your comment. Okay, let's match it up. Access ports सिंगल VLAN ट्रैफिक लेके जाते हैं। दैट मीन्स एक्सेस पोर्ट आप उन्हीं पोर्ट्स को बनाओगे जो स्विच से होस्ट की कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं। एंड ऐसे मुझे यहाँ पे 6 पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। So definitely any particular port which is connected to the host will be configured as an access port. 6 access ports आ रहे हैं और ट्रंक पोर्ट्स मल्टीपल VLANs का ट्रैफिक लेके जाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, if the connectivity is between switch to switch, between switch to router, or between a switch to let's say firewall, in such cases definitely we need a trunk link because हमारा कई सारे VLANs का ट्रैफिक एक साथ फ्लो होने वाला है। So these 2 points interface X and Y, basically the switch port X and Y, ये आपके कॉन्फ़िगर होंगे as the trunk. ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करने का रीजन होता है, अगर आप ट्रंक नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका लिंक एक्सेस की तरह बिहेव करेगा। दैट इज ऑल्सो अ डायनेमिक फीचर जिसके बारे में हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे इन द कमिंग सेशंस। तो गाइस ट्रंक लिंक नहीं कॉन्फ़िगर किया तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज एक्सेस। एक्सेस पोर्ट सिंगल VLAN का ट्रैफिक लेके जाता है। दैट मीन्स लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कर दिया होता एक्सेस 7 तो पीसी इस पीसी के अलावा बाकी कोई डिवाइसेस तो बात ही नहीं कर पाते। तो द प्रॉब्लम इज
if trunk link carries all the different types of the VLANs in a single go, it can contain them. तो trunk link कैसे identify करता है in different VLANs के frames? So how trunk identifies the frames? This will be the question that I'm putting you on for this week, right? आज का हमारा ये हफ्ता हम यहीं पे फिनिश करेंगे. नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि ट्रंक लिंक्स बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करती हैं अपने फ्रेम्स को, एंड what all more cooler features are available for the switches. Guys, I hope this was an informative session. If there is anything, I'm giving you guys a few minutes. Please raise up your questions. Drop your questions in the chat box, please. Okay. Guys, I'm asking you to drop your comments on the YouTube chat box, not on my WhatsApp personal. But still, it's a question. Definitely, I'll answer your question. I'll just wait for everyone, right? I know multiple people are typing their questions here. So yes, I'll just wait for you all. Okay, I'll quickly go for the YouTube chat box again and let's see क्या आप लोगों ने YouTube पे भी comment किए हैं या नहीं. Guys, I'll request, meanwhile the live is going on, please do comment on the YouTube itself so that मैं ही नहीं, हमारी पूरी community आपके सवाल देख सके. Okay, so there is no, okay, it was Akshar, that's it. Hi, Akshar. There's no comment on the chat box in YouTube, but yes, on WhatsApp I've got a few questions, so I'll try to answer your questions very quickly. Okay, there are some questions इनके answers मैंने already video में explain किए हुए हैं guys, so I will be definitely skipping those questions because I want everyone's time to be utilized, right? आप video को rewind करके please आप initially शुरुआत के 18 मिनट का वीडियो देख सकते हो to get your answers जिनके questions मैंने नहीं पूछे. And other than that, these interesting questions, yes, I'm just sorting out your question, guys. Just give me a minute. Okay, this is an interesting question. आप में से किसी ने पूछा है कि what is the role of switch, right? Okay, what is the role of switch in a LAN? Okay, that's nice. Let's go. Switch का LAN में क्या रोल है? सिंपल सा सवाल, मैं दो तरीके से जवाब देने पसंद करूंगा, राइट? ये रहे आपके दो सिस्टम्स.
इनको मैंने एक LAN केबल या ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर दिया एंड आई फॉर्म्ड अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, दे आर कम्युनिकेटिंग टू इट। अब आपके पास ये तार नहीं, you cannot use this Ethernet cable. And now I'm giving you 4 devices to connect all together. But remember, collision नहीं होना चाहिए. What will you do? Definitely हमारे पास आखिरी ऑप्शन स्विच ही बचता है, राइट? बिकॉज ब्रिजेस में इतने एडवांस फीचर्स नहीं थे। स्विच असल में मल्टीपल डिवाइसेस को लेयर 2 के बेसिस पे कनेक्ट करता है। दैट मीन्स आपके एक होस्ट नेटवर्क को बनाने के लिए, कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है LAN में। ये हुआ इसका एक बेसिक सा जवाब। अब बात करते हैं इसके रोल की इन द LAN in terms of the technical aspects, right? So guys, I love to give analogies, so let's go with one of my analogy here. Just a second. You are talking about switch. आप imagine करो आपके switch को as a traffic cop. Okay, now this particular person is very busy in intersection. Okay, जिस तरीके से आपको ट्रैफिक कॉप कार्स को अलग अलग लेन्स में डायरेक्ट करता है, राइट? ठीक उसी तरीके से आपका स्विच आपके डेटा फ्रेम्स को उनके इंटेंडेड डेस्टिनेशन नेटवर्क्स तक गाइड करता है इन द LAN। यहां पर आपके फ्रेम के डेस्टिनेशन एड्रेसेस को पढ़ा जाता है। हर फ्रेम के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस होता है। ओके, तो आपका स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को रीड करके ही अपने फॉरवर्डिंग डिसीजंस देता है कि उसे फ्रेम को कहां पहुंचाना है, उसका टारगेट लोकेशन क्या है। इस तरीके से आपका जो ट्रैफिक फ्लो है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है। आई होप यू गॉट योर आंसर। तो नेक्स्ट सवाल है यहां पर कि ओके ना यार, दिस इज नाइस। हाँ, व्हाट सॉफ्टवेयर टूल्स आर अवेलेबल फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग LAN परफॉर्मेंस? LAN की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए, ठीक, अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर टूल्स को मैनेज करने को मॉनिटर करने की LAN परफॉर्मेंस के लिए, ये ठीक एक कंट्रोल टावर जैसा होता है जो आपके एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिलते हैं सभी फ्लाइट्स के लिए, राइट? सॉफ्टवेयर टूल्स आपके नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो बेसिकली आपके कंट्रोल टावर की तरह बिहेव करेंगे और आपको रियल टाइम इनसाइट देंगे आपको पूरे LAN नेटवर्किंग की, LAN ट्रैफिक की। यहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स देख सकते हो। कुछ पोटेंशियल इश्यूज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। इन पर्टिकुलर टूल्स की मदद से एडमिनिस्ट्रेटर्स ये ट्रैक करते हैं कि उनके नेटवर्क का हेल्थ कैसा है। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। एज वेल एज गाइस, यू वोंट बिलीव, इवन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस, it is like much of the air traffic that the controllers manage within the flight so that they can ensure the smooth operations. I hope you guys got your answer. Thank you so much, guys. I won't be taking your names because it is a personal WhatsApp message, but yeah, it was a question. Thank you so much. I'll request everyone of my viewers, guys, please comment on YouTube itself. That will help us to grow in the channel also, right? Okay, so I think we are done for the day. And before closing this day, don't you guys want to know what will be the next part? Okay, let me get to my closing speech then. Guys, first of all, thank you so much. The way you guys are joining and just boosting it up, it's amazing. As we navigated the fascinating world of VLAN, it is not yet completed, okay? We have just understood the basics and the importance of the VLANs so that we can learn the diving of its complex configurations and troubleshooting. You people and your support and enthusiasm, it keeps this particular community thriving, and I'm incredibly grateful for each and every one of you who teams in to learn and grow together. Guys, always remember, mastering VLANs not only enhances your network management skills, but also opens up new opportunities for optimizing these entire network infrastructure and even securing it out. Okay, so if you have any particular further question, or let's say if you guys need any kind of clarification, so please don't hesitate to drop any particular comment below, or you can even reach me out directly on the social media. I would love hearing from you all, and yes, I'm always here to help you.
make sure you give this video a thumbs up, and if you enjoyed it, please do subscribe to the channel. Okay, guys, please don't forget that you have to hit that notification bell too, so that you're the first one to know whenever we are uploading any new content. We have the exciting lineup of the topics coming up, including the advanced routing techniques, network automation, and much more. Lastly, a huge thank to everyone who participated, the YouTube comments, as well as the WhatsApp messages. Please share your own experience here. Consider this particular page, this particular channel as your own channel. Your engagement, it will definitely make these sessions dynamic and valuable for everyone. So until next time, keep pushing the boundaries of your knowledge. Stay curious and continue to build the innovative world of networking that we always fantasize about. Have a fantastic day, guys. I'll see you in the next session. Bye-bye. Trying to work you out is killing. Ever since my heart's been missing.